बच्चों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ डायनामिकल सिस्टम के बारे में। द सिस्टम इन विच द एटम्स आर इन मोशन। ओके, नाउ ये मेरे पास 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कौन सा पुत्र? 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। The position of any particle in a space, the particle moving in a space, is described by 3 coordinates: x, y, and z. Okay, in space, the position of any particle is described by 3 coordinates x, y, and z. Now, let me consider diatomic molecule. तो मेरे पास diatomic molecule है that it consists of 2 atoms. ठीक है, they're bonded together. They're bonded together. इनमें bond होता है, ठीक है, due to which they are separated by some distance d. इनमें bond होता है, will keep them separated at some distance d. Okay, how many coordinates are there to describe the diatomic molecule? Period 6 coordinate. 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, ये तो आ गए। तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कितना हो गए? 6। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट डिस्क्राइब टू फाइंड पोजीशन पार्टिकल, पोजीशन ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल इज 6। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट नीडेड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज 6। ठीक है, एंड नंबर रेशियो कितना हो गए? B. They are keeping a fixed distance from each other. It means the number of relations हो गए 1. तो what are the number of degrees of freedom? Number of degrees of freedom are 6 minus 1. 6 minus 1. That is number of independent coordinates में से पुत्र हम क्या घटाएंगे? Number of relations between them. ठीक है तो बच्चे, टू फाइंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या करेंगे हम? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स नीडेड टू डिस्क्राइब दिस सिस्टम में से नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन घटा देंगे, वो आगे नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा, लेट ए इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास number of coordinates per atom. ठीक है, तो D is equal to number of relation क्या है? ठीक है, तो so n क्या है? number of degrees of freedom बापरे, ये आ गया 3a minus D किया गया। ये हमारे पास नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम्स। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट पर एटम A, नंबर ऑफ रिलेशन between atoms is equal to D. So what are the number of degree of freedom? 3a minus D. इस केस में क्या हुआ? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कितने हैं पर एटम? 3, 2 एटम है तो कितने आ गए? ये आ गया 3 into 3 नंबर -1 n is equal to 5. तो by 5 नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन आ गया 1 बिकॉज दे जॉइन टुगेदर बाय सम बॉन्ड। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिग्री बाय 5। ओके, इन केस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल, ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल इस तरह हो सकता है, लीनियर हो सकता है। इट कैन बी फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज द ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल लीनियर A B C लाइक H2S H2O एक्स्ट्रा। ये लीनियर ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें हाउ मेनी इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट वी नीड? 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके।
And how many relations between them? C joined with A by some bond D, A joined with B with some bond D. ठीक है. So number of independent आ गए 2, number of coordinates आ गए 9. तो degree of freedom R and is equal to 3 into 3 minus 2 is equal to 7. ये आ गया 7 degrees of freedom for the triatomic molecule which is linear. अच्छा, एक हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल है, ये A, ये B, ये C, ये A, ये B, A, C. The atom being on the vertices of the triangle. ये वो triatomic है, A, B, C. They're also triatomic, but the atoms are at the vertices of the triangle. इस केस में how many independent coordinates we need? 9. 3, 3, 3, 9. ठीक है, तो 9 coordinates चाहिए ना हमें. अच्छा, और क्या चाहिए हमें? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन कितने हैं? 1, 2 and 3. ठीक है, तो so what then? How many degrees of freedom we have? N is equal to 3 into 3 minus 3 is equal to 6. No degree of freedom there. So a triatomic molecules, which is not a linear, have 6 degrees of freedom. The concept. Now, अब मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल में देखते हैं. मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल में देखते हैं. मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स पर पॉइंट मास. आटम का पॉइंट मास. ठीक है. It is moving along x-axis. This point mass is moving along x-axis. It is monatomic molecule. So it can have only 1 degree of freedom. Why? Because it is moving in the linear direction, and we need 1 independent coordinate to describe position of the point mass. So its degree of freedom is 1. But suppose it is moving in a plane. In a plane, we know we need 2 coordinates to describe the position of the particle. And the particle is moving in a plane. Then we need 2 coordinates to describe the position of the particle. It means the number of degree of freedom are 2, n is equal to 2. Similarly, we have space x by z. We need 3 coordinates to describe the position system, position of the monatomic molecule. Because it is moving, it can move anywhere in the space. So we need 3 position coordinates, x, y, z. So number of degree of freedom is equal to 3. But this is a molecule, this is a monatomic molecule. It's a point mass. मैंने अभी बोला आपको, it's a point mass. अभी बता के हटाऊं, it's a point mass. So point mass में से कभी एक्सिस क्रॉस नहीं कर सकती. It's a point mass. So it don't have any rotational degrees of freedom. Okay. But अगर fine body है, it's a fine body which has some size, then it can have 6 degrees of freedom. पहली है ये fine body, finite body. This molecule can move anywhere. It has 3 translational degrees of freedom. Why? Because we need 3 coordinates to decide the position. है ना? तो इसकी तो 3 तो होगी इसकी degree of freedom due to the transition motion. Now it can rotate about any axis. It can rotate about x-axis, or y-axis, about z-axis. It can rotate about x-axis like this, and like this. So it has 3 rotation degrees of freedom. मतलब इसमें total number of degrees of freedom आएगी 6. 3 translation, 3 rotation.